Welcome back. This is a new series जो मैं आज start करने जा रहा हूँ. And in this first episode, we will discuss about what the phenomenon is actually. So this series is about consciousness, and we will discuss briefly, and we'll try to go into as much depth as possible today. कि consciousness क्या है, or what's its nature, what is its purpose, and what's its definition. So the answer is, well, in the beginning, I like to give the answer and then build my case to defend that answer. So the answer is K consciousness in quotation in inverted commas, uh, information processing itself. ये तीन एस्पेक्ट्स हैं इस डेफिनेशन के कि एक नंबर वन है इंफॉर्मेशन, नंबर टू है प्रोसेसिंग एंड नंबर थ्री है itself. ये तीनों जब at the same time they transpire, so it gives rise to consciousness. Now एक थोड़ा सा briefly discuss करेंगे कि problem, what is the problem with consciousness. Basically the feeling कि we are as humans, we know that what is going on, we are aware, self aware, हम अपने आप से aware हैं, हम अपने environment से aware है, हम अपने जो whatever is happening हमारे environment में activities, different events, हम उसकी awareness रखते हैं, उसको register करते हैं in our memory and we can recall that memory later. So this is all a unique experience जो कि as far as we know only animal species में, animal kind में homo sapiens have had, और अभी जो modern humans है they experience this. तो feeling something and knowing, having the awareness, कुछ आपको महसूस करना, कुछ feel करना और इस चीज़ की awareness रखना कि आप वो feel कर रहे हो is what consciousness is. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फीलिंग जनरेट होती है, ये जो ऑब्जर्वेशन है इंसान की अबाउट सेल्फ और अबाउट इट्स एनवायरनमेंट और इट्स प्लेस इन द एनवायरनमेंट, ये कहाँ पे है, ये कैसे होती है, इसके इसका फार्मूला क्या है, इसकी कॉजेस क्या है, इसके रीजन क्या है, वो सारा ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे आ जाता है क्योंकि देर इज नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना हम इंसान और साइंटिस्ट इजीली रिड्यूस डाउन कर लेते हैं कि बेसिकली कॉन्शियसनेस कहाँ है. तो ऑब्वियसली इट्स इनसाइड योर ब्रेन. ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, या व्हाटएवर इज हैपनिंग विद योर न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है आपकी माइंड में, बेसिकली दैट इज समहाउ गिविंग राइज टू दिस इमर्जेंट फिनोमेनन जो कि कॉन्शियसनेस है. तो बेसिकली आपकी जो इंसान की अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें अगर आप देखो, आपके हार्ट में, आपके लिवर, लंग्स में, दे आर डूइंग देयर फंक्शन, दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन और वो उसको रिपीट करें. ब्रेन जो है, ब्रेन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. ठीक है, ब्रेन इज सुपरवाइजिंग एवरीथिंग जो कि सारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं. उसके अलावा आपकी सेंसरी इनपुट्स जो कि आपकी टच, स्मेल, आपकी साइट है और आपकी हेयरिंग है और आपकी अनदर सेंस, उन सब से लेके एक उनको प्रोसेस, वो इंफॉर्मेशन जो रिसीव होती है उसको प्रोसेस करके एक सिक्स सेंस सॉर्ट ऑफ बनती है जो कि अवेयरनेस है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन एवरी मोमेंट ऑफ टाइम. तो ये बेसिकली एक सिम्टम है जिसको अंडरस्टैंड, जिसको स्टडी करने के लिए उसका नाम रखा गया कॉन्शियसनेस. उसको स्टडी करने की कोशिश बहुत देर से की जा रही है, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं किया जा सका कि अगर आपके ब्रेन के अंदर कॉन्शियसनेस होती है राइज, तो कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जो ब्रेन है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स डू डिफरेंट जॉब्स, दे हैव सर्टेन जॉब्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जो आपकी कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर सके या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अपीयर हो सके. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर अवेक, ठीक है, जब आप स्लीप, यू आर नॉट कॉन्शियस, ठीक है, आपको नहीं पता क्या चल रहा है, अवेयरनेस, ठीक है, डिग्री आप स्लीप हो, उसके अब बाहर कुछ भी हो गया, आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर, आपकी अवेयरनेस नहीं है आपकी एनवायरनमेंट से. लेट्स से आपकी आइज क्लोज्ड है, लेकिन कोई अगर
आप आईज ओपन करके somehow सो रहे हो, इंफॉर्मेशन इज स्टिल गोइंग थ्रू योर आईज इनटू योर ब्रेन, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रही, मे बी प्रोसेस सबकॉन्शियसली हो रही है या अनकॉन्शियसली हो रही है, लेकिन आप एक अवेक स्टेट में नहीं हो। और जब व्हेन यू आर अवेक, ठीक है, तो द होल ब्रेन, मतलब व्हेन यू आर ड्रीमिंग, आप ख्वाब में हो या सोए हुए हो, आपके ब्रेन में कुछ एक्टिविटीज हो रही है जिसके अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ब्रेन में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है। और ये कैसे पता चलता है? जब ब्रेन को स्टडी किया जाता है अंदर एमआरआई या फंक्शन एमआरआई, जिसमें लाइट अप होते हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो इतना अभी प्रिसीजन नहीं हो सकी। मॉडर्न जो टूल्स ऑफ प्रोबेशन जो स्टडी है, और टूल्स ऑफ स्टडी जो है ना, लेकिन उससे ही पता चलता है कि इस पार्ट में एक्टिविटी हो रही है, तो इस different parts have different names. The brain has been studied very much for centuries, so that's no debate there. Like in problem say, like if the whole brain is working together, different parts are working together, and then if you take one part out, you somehow still have consciousness, because it's not that a specific part is responsible for that. So it's more like an emergent property of your uh, the processing of your brain. So as a whole, consciousness appears to be ऐसा लगता है कि consciousness arise हो रही है आपके brain की overall activities के result में, whatever different parts जो brain के हैं, they're doing their job, and collectively जो एक emergent एक एक sort of projection या एक सिमुलेशन की जो प्रोजेक्शन, जिसमें रेंडर हो रहा है इंटायर एनवायरनमेंट, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर, हु वी आर, व्हाट डेट इट इज, क्या टाइम है, क्या एवरीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन हर तरह के इंसान का ब्रेन प्रोसेस करके उसको उसको रजिस्टर करके, उसको प्रोजेक्ट करके, एक सॉर्ट ऑफ वीडियो गेम, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो उसमें जो रियलिटी प्रोजेक्ट हो रही है स्क्रीन पे, दैट इज इमर्जेंट, क्योंकि फंडामेंटली प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड उस नंबर को क्रंच करके, और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो रेंडर करके एक एनवायरनमेंट उसकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, बट इट अपीयर्स कि एक रियल वर्ल्ड की तरह हमें अपीयर होती है। तो इट इज़ लाइक दैट, लेकिन इट इज़ नॉट अभी तक इट इज़ नॉट डिफिनेटिव आंसर नहीं है साइंटिस्ट ऑफ एनी फील्ड कि कॉन्शियसनेस क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस में फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट, वी डू नॉट, इट इज़ नॉट यूजफुल। अगर हम एक आज भी जो डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस के इज़ नॉट यूजफुल, क्योंकि it is in my opinion it's very clear, and ये हमें एक राइट पैथ तो देती है कि विच टू फॉलो, जो कि हमें लीड करेगा towards positive and productive results, लेकिन as for all intents and purposes we cannot make a computer conscious, या हम अपनी consciousness को डाउनलोड करके स्टोर करके रिवाइव कर, मतलब these are the practical uses। अगर हम एक फिनोमिनन को समझते हैं तो हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि अभी एज ऑफ नाउ हम नहीं कर सकते। सो लेट्स बिगिन, एंड द आंसर के इंफॉर्मेशन processing itself, how I came up with this, इसको समझने के लिए we have to understand the the first idea of this phrase, this sentence or this definition के information processing itself का क्या मतलब। Basically information means everything। मैं इस definition पे consciousness की तब पहुंचा जब मैंने realize किया एक different phenomenon, like when मैं I was thinking about Big Bang and origin of universe, and how this हमारी यूनिवर्स एक कायनात कैसे वजूद में आ सकती है फ्रॉम नथिंग। तो फ्रॉम देयर I started connecting the dots, and I realized how
simple it can be. And we with with this information we can have the whole universe come into existence with simple uh, consciousness, because the information processing itself, the moment universe major information they underwent and went through a specific process, when it started processing itself, the whole universe came into existence. Listen, that's a explanation and discussion and debate for different series, जिसमें time और universe के physics के बारे में बात हो रही है. Right now we are more concerned about human consciousness. लेकिन that's the point. Ultimately they connect, both connect. It's more like a circle. Uh, it started from the Big Bang, and now we have the same simple process, that is information processing itself. So let's understand okay, what is going on uh, when we are conscious. जब हम consciousness हमारे पास है, हम उसको exercise कर रहे हैं, तो what is going on? So if we say कि let's see, we can see something, हम कुछ हमारे सामने पड़ी हुई एक चीज, एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो सिंपल अगर हम उसको इस कंटिन्यूस टाइम फ्लो को, जो टाइम पास हो रहा है, अगर हम उसको पॉज कर लें एक सेकेंड और हम टेक अ स्टेप बैक एंड हम इसको प्रोसेस करें कि व्हाट इज गोइंग ऑन इस पिक्चर में, क्या हो रहा है कि लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ ऑफ अ सरफेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट. हमारे सामने पड़ा हुआ है, हम उसको देख सकते हैं, हम फील कर रहे हैं कि यार हम कॉन्शियस हैं, हम डिफरेंट चीज़ें फील कर रहे हैं, हम कुछ सुन भी रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, ऑल द सेंसेस. तो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन जो है वो समहाउ हमारे ब्रेन तक पहुंचती है. अब क्या इंफॉर्मेशन, लेट्स से अगर हम एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइट, अगर हम देखें ये सेंस ऑफ साइट को, तो हमारे सामने अगर लेट्स से एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो वी कैन सी इसकी शेप, उसका कलर एंड एवरीथिंग. लेकिन जब लाइट से रिफ्लेक्ट ऑफ करके थ्रू आवर आइज, बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है. What is process? We have to go deeper. कि एक फोटोन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटोन पार्टिकल ऑफ लाइट is reflecting off a surface, और इसमें से एनर्जी के सर्टन बैंड की एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, रिमेनिंग रिफ्लेक्ट हो रही है. अब वो जो रिफ्लेक्टिंग वेव है, इट हैज सर्टन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन वेवलेंथ. ठीक है, वो वेवलेंथ की एनर्जी की एक रे जो है, लाइट की रे, दैट इज एंटरिंग थ्रू आवर आई. ठीक है, और सर्टन हमारे आई में सेंसर्स हैं जो कि ट्रिगर होते हैं सर्टन वेवलेंथ की रेज से. तो दैट आर ट्रिगर्ड और दे आर स्टिमुलेटेड, and because of that it response is generated in our brain. Certain neurons are fired, triggered, fired, certain activity होती है, और that's it. फिर उसकी जो projection है, उसकी जो projection है, that we perceive कि यार it's red color because just like a computer, वो जो language brain के अंदर और data पड़ा हुआ है इसकी आर्काइव में से, उसमें से फिर वो रिट्रीव होता है कि यार कलर रेड है, शेप राउंड है या स्क्वायर है या क्यूब है या whatever. तो व्हाट वी आर कॉन्शियस ऑफ, व्हाट आर वी सीइंग, और वो फिर हमारे जो स्टोरेज मेमोरी में भी वो चीज़ स्टोर हो रही है लाइव, एटलीस्ट फॉर क्विक मेमोरी जो एक्सेस या रीड ओनली मेमोरी है या एक्सेस मेमोरी उसमें स्टोर हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो रही है नहीं, वो एक डिफरेंट फिनोमेनन है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. बट लेकिन हम मे बी वी सी एन एप्पल, रेड कलर का एक एप्पल इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इज दिस. तो ऑल इट्स हैपनिंग इज डिफरेंट. मतलब कि अगर हम देखेंगे इंफॉर्मेशन डिफरेंस है ना, कि लाइट की रे अगर कलर रेड है तो सर्टन रे ऑफ लाइट होगी जिसकी वजह से सर्टन ट्रिगर होगा हमारे ब्रेन में रिस्पॉन्स और सर्टन स्टिमुलाई एंड न्यूरॉन्स एंड ऑल ऑफ दैट. जितना इस चीज़ को प्रोसेस को पढ़ेंगे समझेंगे उतनी समझ आएगी कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिजल्ट. जो हम प्रोजेक्शन देखते हैं दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट डिफरेंस स्लाइटली वेरिएशंस ऑफ वेव में, फ्रीक्वेंसी में, लेंथ में,
renders different consciousness experience. इसी तरह साउंड का भी है, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो टू पीपल हैव डिफरेंट साउंड, बिकॉज उनकी जो डिटेल्स है, पिच या फिर डिफरेंट वेरिएशंस हैं उनकी साउंड वेव्स में, जिसकी वजह से डिफरेंट साउंड आ रहे हैं। उसके हम डिफरेंट कॉन्शियस होते हैं, उससे फिर हम अपना मीनिंग जनरेट करते हैं। माइंड्स माइंड डज व्हाट इट डज, बट ऑल इट इज हैपनिंग के इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू अस। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में, ब्रेन में आ रही है और प्रोसेस हो रही है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इटसेल्फ का मतलब ये हुआ कि द वेरी मशीन, द वेरी डिवाइस जो कि और ब्रेन इज, जो कि प्रोसेसिंग करके एक प्रोजेक्शन थ्रू आउट कर रहा है, जो कि बाद में वो प्रोजेक्शन को भी रिसीव कर रहा है, मतलब कि उसको भी इनपुट्स के तौर पे ले रहा है। तो वो एक लूप है, कंटिन्यूस फीडबैक लूप है, कि जो रिजल्ट है वो बैक गोज बैक इनटू उसकी यही प्रोजेक्शन में, उसकी प्रोसेसिंग में। तो दैट्स व्हाई इट्स सेल्फ अवेयर कि व्हाट एम आई डूइंग। तो basically this is the brain itself is made of electrons, protons, subatomic particles. There are certain atoms, different types of carbon, nitrogen, oxygen, water. It needs water, hydrogen, where all of that, or certain they're merged together. वो combine होके different proteins बनाया, certain set of gray or white matter बना हुआ है, उसकी सब certain composition है. So all of that, लेकिन fundamentally it's the same. सेम एटम्स कह लें या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो कि उस हमारे इन्वायरमेंट में ही है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में भी है। तो द ब्रेन इज मेड ऑफ सेम स्टफ दैट इट इज, मतलब कि रिसीव इंफॉर्मेशन जो इसमें रिसीव कर रहा है, इट इज जस्ट प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब लाइट, लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन एक लाइट इमिट करता है, वो लाइट हमारे ब्रेन में प्रोसेस हो के, वो एब्जॉर्व हो के, वो प्रोसेस हो के, वी अंडरस्टैंड के व्हाट वी कैन सी या व्हाट वी कैन हियर या व्हाट वी कैन स्मेल, या जो भी सेंसरी sensory stimulation we are receiving. Basically, it's just a form of information we are getting. Different information means different things according to हमारा डेटाबेस है ब्रेन का, जो आर्काइव है, जो कि मे बी ईयॉन्स में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेवलप हुआ है। जो कहता है that archive is there to project meaning. What does this mean? ये this is color red, this is blue, this is white, this is only. That is why maybe people who have different issue, mental issue, or some people are colorblind because they configuration or they have defect in this whole device is as machine में. So this is the information we are getting, and the same machine that's made of simple, same stuff that is processing that information. Fundamentally, I mean, a neuron, certain molecule, a few molecules का बना होता है, certain atoms से ही fundamentally उसको zoom in करे तो बना हुआ है, and that atomic level पे ही they are receiving that wave of light. But that wave of light receives and triggers a chemical reaction, जो कि ultimately फिर ट्रिगर करता है अदर फिनोमिना को, अदर प्रोसेसेस को, अदर प्रोसेसेस को, तो हायरार्की करते करते टॉप पे प्रोजेक्शन हो जाती है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और वो जो प्रोजेक्शन है वो गोज बैक इनटू द प्रोसेसिंग, कि भाई व्हाट आर वी सीइंग, यस वी आर सीइंग व्हाट वी आर सीइंग दैट, लेकिन हम वी आर अवेयर that we are seeing this. Okay, somehow we imagine from a third person what we are doing, like from हमारा जो camera angle होता है, when we imagine, we do not imagine from first person view, हम third person के view से we imagine ourselves doing something. ठीक है, वो same process हो रहा है, लेकिन it is not triggered by environmental stimulation, but our brain की एक और function है, जो कि वो जो consciousness का एक प्रोसेस ट्रिगर कर सकता है, जिसको हम फील करते हैं कि वी आर इमेजिनिंग समथिंग, लेकिन इट लैक डिटेल्स, क्योंकि एक नेचुरल ट्रिगर, हमारे पास इंफॉर्मेशन की उतनी डिटेल्स नहीं है, इन्वायरमेंट से उतनी इंफॉर्मेशन नहीं आई, हम जस्ट एक
उतनी मोटिवेशन उतनी स्टिमुलेशन नहीं होता. बट व्हेन वी यूज सर्टेन ड्रग्स, जैसे एलएसडी है और सम सर्टेन काइंड ऑफ मशरूम्स हैं, देन पीपल टेंड टू हैव hallucinations क्योंकि दे हैव actually stimulation, high level of stimulation in their brain, जो कि फिर उनकी imagination को mix कर देता है with reality and they start seeing stuff. लेकिन तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन they are conscious of that in that moment. वो maybe long term storage में safe हो ना हो, लेकिन short term में तो definitely they are conscious of something. Anyway, this is the first episode and we will continue from here. In few episodes we'll unfold the explanation, this perspective. Okay, information is processing information and eventually at the end of the series हम इसको connect कर देंगे with the big bang कि how this process can explain कि this universe can come into existence without any deity, without any assumption, maybe assumption, not sure, but without any thing having before the big bang. I mean, just big bang can create itself. That's the idea जो कि पॉपुलर साइंस फिजिक्स साइंटिस्ट बड़े बड़े यही क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स just came into existence, it created itself, it just started, it just began. लेकिन how, तो how could you explain? आप connect करेंगे at the end. Thank you very much.